So right now in this transport facility, this with the industrial process, many of the automated system refers to the robotic system. For example, you can take the example of Tesla cars. कार्स में हमारे पास क्रूज ड्राइव हो गया, हमारे पास ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम हो गया। ये सब हमारे पास गाड़ियों के अंदर अवेलेबल होता है। तो इसके अंदर ऑटोमेटेड सिस्टम बेटा, दे आर मोस्टली इंक्लूड इन योर कार्स एंड योर बसेस, लॉरीज एंड योर ट्रेन्स एंड योर एयरक्राफ्ट एज वेल। फॉर एग्जांपल, modern trains uses automatic signal control system that if the driver of the train goes through a red stoplight, computer will automatically stop the train. Now again, I was saying the same thing that humans can make the mistake, but even if they have done it, machines are better versions of themselves, they are accurate. This will make use of sensors at the side of tracking, sending signals to onboard computers. Actuators will be used to apply the brakes, right? As a, for example, when I talk about this automated use of automated systems in transport industry, though, we can take the example of self-parking cars. आप लोगों ने ऑडी के अंदर या कुछ टेस्ला के मॉडल्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपकी जो कार्स हैं वो ऑटोमेटिकली पार्क हो जाती हैं। उनके जो चारों कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर सेंसर्स अवेलेबल होते हैं, और वो सेंसर जो है आपकी जो भी इस आपकी स्पेस है उसको जो है वो एनालाइज करते हैं, और आपकी जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिकली पार्क हो जाती है। आई एम लुकिंग फॉर अ वीडियो जो मैंने देखी थी विच कैन हेल्प यू विद द सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा, check this one. Requirements when parking in. The Park Assist makes it easier to drive out of parallel parking spaces. Use the Park Assist to park in or check the requirements when parking in manually. To use the automatic parking spot departure, start your BMW with the Start Stop button. Press the Park Assistant button or engage reverse gear to switch on the Park Assistant menu. Activate the Park Assist in the top right corner and confirm the required direction for leaving in the control display. During the maneuver, please keep an eye on the surroundings. In case of any danger, intervene by braking or steering. The system calculates the optimum line to take when driving out of the space and takes over steering, accelerating, braking, and changing gear. Your BMW will not completely drive you out of the parking space, but will put you in a position where the driver can drive out of the space without any further steering movements. Please make sure that it is safe to leave the parking space in the current traffic conditions and drive off as usual. Continue watching our how-to series to get the most out of your BMW. खैर, हम तो पाकिस्तानी हैं। जितनी देर में हम हमारा ऑटोमेटिक सेंसर काम करेगा, इतने में से पीछे में से कोई रक्षा गाड़ी या बाइक जो है आगे हमारे गाड़ी के अंदर आके घुस जाएगा, और फिर हमें एक लंबी बहस करनी पड़ेगी। तो ये तो हम, और डेफिनेटली हम पाकिस्तान में तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो गाड़ियां ऐसी लगाई हुई होती हैं कि सेंसर जो है ना खुद परेशान हो जाएंगे कि भाई मैं ये ऐसी जगह पे कैसे पार्क करूं, बट इस सर वो हर वक्त सर टू 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 करते रहते हैं सेंसर, खोल के ऑफ ही कर देते हैं उनको। हाँ, सेंसर जो है वो खुद ही परेशान हो जाएगा। Here, it has the same concept that the driver goes along the rows of parked cars on board sensors and cameras, gauge the size of the parking space. Onboard computers warn the driver if the suitable place has been found. The driver then selects auto parking and onboard computer takes it. Again, actuators. What are actuators? They are used to control your task. They are used to operate the steering, rakes and brakes and throttle, when to speed up, when to steer down, and this allows the car to go from step one to step two to automatically park. Again, I have sensors on the bumpers of the cars that are used as transmitters and receivers.
The sensors transmit the signals and bounce off objects and reflect back. And all of this. Again, इसके advantages क्या है भाई? It allows the same number of cars to use fewer parking space. Yes, definitely. इंसान जो है वो बुरी तरह से गाड़ियां पार्क करते हैं. Machines are much more educated and respectful. For I've seen a lot of people that they have parking spaces for two people, but just they do not want someone to park right next to them. They park their car in such a way that no car can be parked right near to them. However, if we use machines, they use the same number of we can utilize a limited number of parking space for a more number of cars. It can avoid traffic disruption. Cars can fit into smaller spaces. Fewer dents and scratches to car. ऐसा नहीं है किसी ने किसी की गाड़ी में मार दिया पार्क करते हुए. Safer system, you can monitor all objects, very consistent results. Disadvantages can be over reliance on the system. के ऊपर there can be a loss of skill. You would never learn how to park. कभी सेंसर में पानी चला गया तो आपको गाड़ी पार्क करना नहीं आएगी. Faulty, dirty sensors or cameras can send false data or images, जिससे malfunction हो सकता है. Curbing of wheels is a common problem since the sensors may not pick up low curbs. Expensive option that doesn't really save the driver any money. Requires additional maintenance to ensure it functions correctly. सर लेकिन एक्चुएटर्स काफी वो जो लाइक सेंसर्स होते हैं वो चीप नहीं होते क्योंकि लाइक वो सिर्फ एक सेंसर्स ही होते हैं बेटे, एक्सपेंसिव. यहाँ BMW और टेस्ला की बात हो रही है जिसके अंदर वो सेंसर्स एडजस्ट हो सकते हैं. अब आप अपनी मेहरान या खैबर के अंदर तो वो सेंसर्स नहीं लगाओगे ना ना वो काम करेंगे. जी. और सेंसर्स के साथ एक पूरा कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं जो ये पूरी टास्क को कंट्रोल करते हैं. आपके ब्रेक्स हो गए, आपके गियर्स हो गया, आपका स्टेयरिंग हो गया, कितने परसेंट जो है आप अपना जो है वो स्टेयरिंग को रोटेट करोगे, ये सारी चीजें आती है. सिर्फ एक सेंसर नहीं है, पूरा कंप्लीट सिस्टम जी सर. है. इसके बाद वी हैव ओके सो देयर इज वन मोर हेडिंग लेफ्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल. Adaptive cruise control again make use of sensors and outboard computers and actuators to allow a car to remain at a safer distance from another vehicle. Yes, you obviously cannot bump into another vehicle. You have sensors that calculates the distance. Again, right here, you can see again in this chart that first of all, it is going to check that if the distance is safer or not. If and this ये पहले बताएगा. कैसे पहले बताएगा? सिग्नल्स को डिस्टेंस कंट्रोल करके. पहले ये बेटा सिग्नल रिसीव करेगा. सिग्नल रिसीव करने के बाद इसको फिर बताएगा. अगर सेफर है तो ये क्या करेगा? सिग्नल सेंड टू द एक्चुएटर टू अप्लाई ब्रेक्स एंड रिड्यूस थ्रॉटल, रिड्यूस एक्सेलरेशन. अगर नहीं तो आपकी स्पीड जो है वो सेट कर देगा. And again you have right here signals as well. So again I can say that I have signals involved. I have sensors involved. Sensors send signals to the microprocessor. The microprocessor decides that if I have to control this or not. So that's done. I will go through each and every title of this topic, but just in case for फास्टर प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम, अगर आपके पास ऑटोमेटेड सिस्टम का कोई भी सवाल आता है पेपर के अंदर, तो एटलीस्ट यू वुड नो दैट व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट. कॉमन प्रोज एंड कॉन्स तो वो तो आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर लिख सकते हो ना. व्हाट इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम. तो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो सर. Okay, so I am keeping it till here today. If you have any questions, you can feel free to ask. ठीक है. बाकी again we will start it from our next class. We will complete this chapter. Till then, take care. Tata, bye bye. सर
जी जी। सर मैंने आपसे सर बात करनी थी जी जी हुकुम। कि सर आप